Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another video. I hope you guys are all doing well. In our previous video, I just gave you a hint about nephron, the functional part of kidney, but in this video, we will talk about this nephron structure and function in quite detail. So, without wasting our time, let's start the video. Allahumma inni as'aluka ilman nafian. Oh Allah, I ask you for beneficial knowledge. So guys, what is nephron? What does nephron do? Nephron is basically the functional part or unit of our kidney. सो बेसिकली हमारी किडनी का जो फंक्शनल पार्ट है उसको हम कह रहे होते हैं नेफ्रॉन सो नेफ्रॉन इज आवर फंक्शनल पार्ट और फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर किडनी हमारी किडनी में जितना भी काम होगा वो बेसिकली नेफ्रॉन ही कर रहा होगा बाकी सब उसको असिस्ट कर रहे होते हैं लेकिन बेसिक जो यूनिट है यानी बेसिक जो फिल्ट्रेशन और वो सारी चीज़ें that is done in nephron. So the functional unit of kidney is called nephron, and there are over 1 million nephrons in each kidney. And we have a pair of kidney, right? So pair of kidney, it means we have 2 million, 2 million nephrons in our body, right? So this is also a definition of nephron, that is the functional unit of our kidney. So this is also the definition of nephron. So what is the structure of nephron? What is nephron made up constitutes of or made up of? So basically जो nephron है, nephron is divided into two parts. Sorry. नेफ्रॉन के बेसिकली टू पार्ट्स होते हैं एक पार्ट को हम कह रहे होते हैं रीनल कार्पसल एंड द सेकंड पार्ट इज known as और जो एक है रीनल कार्पसल एंड द अदर पार्ट इज नोन एज रीनल ट्यूब्यूल रीनल ट्यूब्यूल B-U-L-E tubule. So, what is renal corpuscle? What is renal corpuscle made up of? And matlab, what is its constitute of? So, renal corpuscle is also divided into two parts. That is glomerulus, and the other one is Bowman's capsule. Bowman's capsule. It is named after its founder, जिसने भी इसको ढूंढा था, जिसने भी इसको पहले फर्स्ट मतलब वेरी फर्स्ट टाइम जिसने भी आइडेंटिफाई किया था उसके नेम के पीछे इसको रखा गया है बोमेंस कैप्सूल इसका नेम है सो देर आर टू पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन दैट इज रीनल कार्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल द रीनल कार्पसल इज नॉट ट्यूबुलर and has two parts renal corpuscle this is renal corpuscle if you guys could identify it in diagram I have also focused it here. So renal corpuscle basically tubular नहीं होता यानी इसमें बहुत सारी tubules नहीं होती ट्यूब्स नहीं होती हैं so
बेसिकली इसके टू पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट है जिसको हम कह रहे होते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस इज बेसिकली द यू कैन से एक कैपिलरीज का गुच्छा है, एक बिल्कुल नेटवर्क है कैपिलरीज का जो इसके अंदर बना होता है। यानी यहाँ पे रीनल आर्टरी और रीनल वेन जो है वो यहाँ पे वेन्स, यहाँ पे ब्लड एंटर करी होगी और यहाँ से आर्टरी के थ्रू ब्लड निकल रहा होगा बाहर। तो ये अंदर वो सारी कैपिलरीज बनी होंगी और उनका कैपिलरीज का एक नेटवर्क सा, एक गुच्छा सा बना होता है और इसको कवर किया होता है एक बिल्कुल बॉल लाइक स्ट्रक्चर या एक कैप्सूल। यानी जिस तरह से एक बॉल है और उस बॉल के अंदर ये फिलिंग सी है ना, तो एक आउटर लेयर ने उसको टोटली चारों साइड से कवर किया होता है और उस जो कवरिंग को हम लोग कह रहे होते हैं बोमांस कैप्सूल। कैप्सूल कह रहे होते हैं उसको इसी वजह से कि उसने पूरे का पूरा उसको ग्लोमेरुलस जो है उसको कवर किया होता है, उसको कवर किया होता है। सो बोमांस कैप्सूल इज अ cup shaped structure that encloses glomerulus. Okay. So what is renal tubule? Renal tubule is totally a tubular structure, यानी इसमें आपको ट्यूब्स ही नजर आएंगी। मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर में ये बेसिकली पूरे का पूरा स्ट्रक्चर एक ट्यूब ही है जो किसी जगह पे थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, किसी जगह थोड़ी सी बारीक हो जाएगी, थोड़ी पतली थिन हो जाएगी, मतलब थिन से मुराद नैरो हो जाएगी। लेकिन ये सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है वो ट्यूब ही है। तो आपके सामने अब ये एक टोटली ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज वन नेफ्रॉन। और एक नेफ्रॉन के अंदर ये वाला पार्ट तो निकल गया, ग्लोमेरुलस और बोमांस कैप्सूल ये दोनों मिलके रीनल कार्पसल। तो रीनल कार्पसल तो ये हो गया। बाकी का जितना भी पार्ट है, आई एम गोइंग टू मेंशन इट विद ब्लैक, बाकी का जितना पार्ट है ये सारे का सारा पार्ट, दिस इज नोन एज renal tubule। ये renal tubule कहलाता है। So what renal tubule is? It starts from Bowman's capsule. Obviously ये जो Bowman's capsule है जिसने ये glomerulus को कवर किया हुआ था, ये बिल्कुल वहां से स्टार्ट होगा। ये जो यहाँ से बिल्कुल ये स्टार्ट होगा Bowman's capsule के बिल्कुल करीब से, यहाँ से ये पार्ट स्टार्ट होगा। इसके बाद the first portion is called proximal convoluted tubule। जो first portion ये जो zigzag सा portion है, it is known as proximal convoluted tubule। guys, proximal मतलब start, सबसे पहले आ रही है, proximal start हो रही है यहाँ से, convoluted यानी टेढ़ी मेढ़ी सी। तो proximal convoluted tubule, ये proximal convoluted tubule है, this part is known as proximal convoluted tubule। The next portion is U-shaped। जो इससे next portion है that is U-shaped। ये वाला जो portion है ये बिल्कुल U-shaped है and it is called loop of Henle। ये बिल्कुल एक loop सी शक्ल बन रही है ना इसकी, एक loop जैसे एक ट्यूब सी U शेप सी बन रही है, तो इसलिए हम इसको कह रहे होते हैं loop of Henle। and the last part, ये देखें last part is, this last part is also kind of zigzag, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी है, तो ये भी convoluted होगी, convoluted। लेकिन एक थी स्टार्टिंग पॉइंट पे तो उसको हमने कहा था प्रॉक्सिमल, एक है एंडिंग पॉइंट पे जो हर चीज निकाल रही है बाहर, तो दिस इज डिस्टल, डिस्टल convoluted tubule। ओके, सो डोंट मिक्स दीज टू ट्यूब्स। ये दो अलग अलग पार्ट्स हैं, एक proximal convoluted tubule and the other one is distal convoluted tubule। ओके,
सो दिस डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो एक कलेक्टिंग डक्ट में जो है वो जाके कनेक्ट कर रही है एक कलेक्टिंग डक्ट को और दैट कलेक्टिंग डक्ट इज बेसिकली इस कलेक्टिंग डक्ट को हम कह रहे होते हैं पैपिलरी डक्ट्स भी कहा जाता है इनको. The distal convoluted tubules of many nephrons open in a single collecting duct. Many collecting ducts join together to form several hundred papillary ducts which drain into renal pelvis. And you know, renal pelvis is the base of ureter. Okay, so this is end of today's topic. If you have any query, just comment down below and I'll try my best to get back to you as soon as possible. Take care. Allah Hafiz.